एरर आ जाता है, बस ठीक है, आप उसको टैब को क्लोज कर दें। मैं एक सेकंड चेक भी कर लेता हूँ वेबसाइट पे, सॉरी फेसबुक पेज पे जाके। यस सर, 1 PM लीड कोड 1 PM नेक्स्ट वीक 2 day 1। यस सर, ये हो गया मैसेज। सेशन तो लाइव हो गया है। हो गया। हाँ जी, वो आ। जी जी हो गया। ठीक है, सो थोड़ा फिर और वेट कर लें, 1-2 मिनट और, क्योंकि अभी तक पूरे पार्टिसिपेंट नहीं आए हैं आई थिंक, या कि इतने ही हैं बस। न्यू सेशन और एन ऑन पॉइंट वन एक्चुअली में मैम, सुमैया, ये जो है ना, इसका सेकंड वीक चल रहा है इस सेशन का। हमने फर्स्ट वीक में लिसनिंग की थी, डिटेल में हर क्वेश्चन देखा था। फिर फ्राइडे को हमने जो है मॉक भी किया था अटेम्प्ट, बट ज़्यादा लोग जो थे वो क्योंकि जुम्मा प्रेयर की वजह से जो है ना वो अवेलेबल नहीं थे, तो अब हम आज फिर एक मॉक टेस्ट कर रहे हैं जो हाफ आवर का होगा। इसमें हम रुकेंगे नहीं, मतलब एक वॉइस पूरी एक ही दफ़ा प्ले होगी और आंसर जो है हम करेंगे साथ साथ। तो आप लोगों ने भी करने हैं, आप लोगों ने वॉइस सुननी है और साथ में आंसर वगैरह करने हैं। फिर हम चेक कर लेते हैं कि क्या होता है आगे। यस मैम सुमैया, 2 बजे जो है आज जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो न्यू सेशन है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकती हैं, बट यू कैन स्टे हेयर एज वेल। लाइक ऐसे तो नहीं होता कि हम एक कहीं हमारा माइंड कहीं से भी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम ज़रूरी नहीं है कि बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे तो तभी हमारा माइंड जो चीज़ें को लर्न करेगा। सो यस, ठीक है सर, नरमी आप स्टार्ट करें। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई है आप सबको ना? यस सर, स्क्रीन स्क्रीन, शेयर। ओके, शुड आई स्टार्ट? यस सर, यू शुड स्टार्ट सर। बिफोर यू स्टार्ट, ये आप लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दें चैट में ना, तो लोग अपने एंड पे भी इसको अगर अटेम्प्ट करना चाहे तो दैट वुड बी गुड। नहीं मैं स्क्रीन हमारे साथ शेयर होगी तो हमारे साथ भी जो हाँ, लाइक विद टीम। मैं कर रहा हूँ। ये टेस्ट का जो लिंक है ये ओपन कर लें अपने पास सब। आ, हाँ ठीक है, ये आ गया आप लोगों के पास। ठीक हो गया। सो आर ऑल ऑफ यू रेडी? आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। यस सर। ओके। This is the IELTS listening test, 2017. Part 1. You will hear a man inquiring in a tourist centre about activities suitable for families. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Now listen and answer questions 1 to 4. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. They're all around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. And I assume there's a cafe or something on board? Sure. How old are your children? My daughter's 15 and my son's 7. Right. Well, there are various things you can do once you've crossed the lake to make a day of it. One thing that's very popular is a visit to the country farm. You're met off the boat by the farmer, and he'll take you to the holding pens where the sheep are kept. Children love feeding them. My son would love that. He really likes animals. Well, there's also a 40-minute trek round the farm on a horse if he wants.
Do you think he'd manage it? He hasn't done that before. Sure, it's suitable for complete beginners. Good. And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake which also belong to the farm. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or two there. Okay, well, that all sounds good. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You pay when you get there. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. So, is there anything else to do over on that side of the lake? Well, what you can do is take a bike over on the ship and then go on a cycling trip. There's a trail there called the Back Road. You could easily spend 3 or 4 hours exploring it, and the scenery's wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. There's no extra charge. What's the trail like in terms of difficulty? Quite challenging in places. It wouldn't be suitable for your 7-year-old. It needs someone who's got a bit more experience. Well, my daughter loves cycling, and so do I, so maybe the two of us could go, and my wife and son could stay on the farm. That might work out quite well. But we don't have bikes here. Is there somewhere we could rent them? Yes, there's a place here in the city. It's called Ratcheson's. I'll just make a note of that. How do you spell it? Ratchesons. It's just by the cruise ship terminal. Okay. You'd also need to pick up a repair kit for the bike from there to take along with you, and you'd need to take along a snack and some water. It'd be best to get those in the city. Fine. That shouldn't be a problem. And I assume I can rent a helmet from the bike place. Sure, you should definitely get that. It's a great ride, but you want to be well prepared because it's very remote. You won't see any shops round there or anywhere to stay, so you need to get back in time for the last boat. Yeah. So what sort of prices are we looking at here? Let's see. That'd be 1 adult and 1 child for the cruise with farm tour. That's $117, and an adult and a child for the cruise only, so that's $214 altogether. Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? 15. Then I'm afraid it's $267 because she has to pay the adult fare, which is $75, instead of the child fare, which is $22. Sorry about that. That's okay. So how do we... That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. Part 2. You will hear a restaurant manager
talking to a small group of new staff who are starting work as kitchen assistants in a restaurant. First, you have some time to look at questions 11 to 16. या कि इतनी Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Good morning, everyone. My name's Joy Parkins, and I'm the restaurant manager. And I understand that none of you have had any previous experience as kitchen assistants. Well, you might be feeling a bit nervous now, but most of our kitchen assistants say they enjoy the work. Okay, they might get shouted at sometimes, but it's nothing personal. And they're pleased that they have so many different things to do, which means they never get bored. And I'll tell you straight away that if you do well, we might think about moving you up and giving you some more responsibility. Right, well, you've all shown up on time, which is an excellent start. Now, I'm glad to see none of you have unsuitable footwear, so that's good. You need to be careful as the floors can get very wet and slippery. Those of you with long hair, I've got it well out of the way, but some of you'll need to remove your rings and bracelets. Just put them somewhere safer today. And remember to leave them at home tomorrow, as they can be a safety hazard. Now, it's going to be a busy day for you all today. We don't have any tables free for this evening, and only a few for lunch. Fortunately, we've got our head chef back. He was away on holiday all last week, which meant the other chefs had extra work. Now, I'll tell you a bit more about the job in a minute, but first, some general regulations. For all of you, whatever your age, there's some equipment you mustn't use until you've been properly trained, like the waste disposal system, for example, for health and safety reasons. Then I think there are 2 of you here who are under 18. That's Emma and Jake, isn't it? Right. So for you 2, the meat slicer is out of bounds. And of course, none of you are allowed to use the electric mixer until you've been shown how it works. Now, you may have heard that this can be a stressful job. And I have to say that can be true. You'll be working an 8-hour day for the first week, though you'll have the chance to do overtime after that as well if you want to. But however long the hours are, you'll get a break in the middle. What you will find is that you're on your feet all day long, lifting and carrying. So if you're not fit now, you soon will be. You'll find you don't have much chance to take it easy. When someone tells you to do something, you need to do it straight away. But at least we do have a very efficient air conditioning system compared with some kitchens. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Now, let me tell you about some of the people you need to know. So, as I said, I'm Joy Parkins, and I decide who does what during the day and how long they work for. I'll be trying to get you to work with as many different people in the kitchen as possible, so that you learn while you're on the job. One person whose name you must remember is David Field.
If you injure yourself at all, even if it's really minor, you must report to him and he'll make sure the incident is recorded and you get the appropriate treatment. He's trained to give basic treatment to staff himself, or he'll send you off somewhere else if necessary. Then there's Dexter Wills. He's the person you need to see if you smash a plate or something like that. Don't just leave it and hope no one will notice. It's really important to get things noted and replaced, or there could be problems later. And finally, there's Mike Smith. He's the member of staff who takes care of all the stores of perishables. So if you notice we're getting low in flour or sugar or something, make sure you let him know so he can put in an order. Okay, now the next thing we need to... That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Part 3. You will hear 2 students called Trudy and Stuart, who are both studying to be librarians, discussing a paper that they are going to write together. First, you have some time to look at questions 21 to 23. Now listen carefully and answer questions 21 to 23. OK, Stuart, we need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet? Well, there's so much we could look into. How libraries have changed over the centuries, for instance, or how different countries organise them. What do you think, Trudy? Maybe we should concentrate on this country and try and relate the changes in libraries to external developments, like the fact that far more people can read than a century ago, and that the local population may speak lots of different languages. We could include something about changes in the source of funding, too. Yes, but remember we're only supposed to write a short paper, so it's probably best if we don't go into funding in any detail. Right. Well, shall we just brainstorm a few ideas to get started? OK. We obviously need to look at the impact of new technology, particularly the internet. Now that lots of books have been digitalised, people can access them from their own computers at home. And if everyone did that, libraries would be obsolete. Yes. But the digitalised books that are available online for free are mostly out of copyright, aren't they? And copyright in this country lasts for 70 years after the author dies. So you won't find the latest bestseller or up-to-date information. That's an important point. Anyway, I find it hard to concentrate when I'm reading a long text on a screen. I'd much rather read a physical book. And it takes longer to read on a screen. Oh, I prefer it. I suppose it's just a personal preference. I expect the libraries will go on evolving in the next few years. Some have already become centres where community activities take place, like local clubs meeting there. I think that'll become even more common. I'd like to think so. And that they'll still be serving their traditional function, but I'm not so sure. There are financial implications after all. What I'm afraid will happen is that books and magazines will all disappear and there'll just be rows and rows of computers. They won't look anything like the libraries we're used to. Well, we'll see. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 24 to 30.
Now listen and answer questions 24 to 30. I've just had an idea. Why don't we make an in-depth study of our local public library as background to our paper? Yes, that'd be interesting and raise all sorts of issues. Let's make a list of possible things we could ask about, then work out some sort of structure. For instance, we could interview some of the staff and find out whether the library has its own budget or if that's controlled by the local council. And what their policies are. I know they don't allow food, but I'd love to find out what types of noise they ban. There always seems to be a lot of talking, but never music. I don't know if that's a policy or it just happens. I've often wondered. Then there are things like how the library is affected by employment laws. I suppose there are rules about working hours, facilities for staff and so on. Right. Then there are other issues relating to the design of the building and how customers use it. Like, what measures does the library take to ensure their safety? They'd need floor coverings that aren't slippery, and emergency exits, for instance. Oh, and another thing, there's the question of the kind of insurance the library needs to have in case anyone gets injured. Yes, that's something else to find out. You know something I've often wondered? What's that? Well, you know they've got an archive of local newspapers going back years. Well, next to it, they've got the diary of a well-known politician from the late 19th century. I wonder why it's there. Do you know what his connection was with this area? No idea. Let's add it to our list of things to find out. Well, I've just thought, you know, people might ask in the library about local organisations like sports clubs. Well, I wonder if they keep a database or whether they just look online. Right. I quite fancy finding out what the differences are between a library that's open to the public and one that's part of a museum, for example. They must be very different. Then something else I'd like to know is... That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. Part 4. You will hear part of a lecture for business students about business values. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In public discussion of business, we take certain values for granted. Today, I'm going to talk about 4 of them: collaboration, hard work, creativity, and excellence. Most people would say they're all good things. I'm going to suggest that's an oversimple view. The trouble with these values is that they're theoretical concepts, removed from the reality of day-to-day business. Pursue values by all means, but be prepared for what may happen as a result. They can actually cause damage, which is not at all the intention. Business leaders generally try to do the right thing, but all too often the right thing backfires if those leaders adopt values without understanding and managing the side effects that arise. The values can easily get in the way of what's actually intended. Okay,
So the first value I'm going to discuss is collaboration. Let me give you an example. On a management training course I once attended, we were put into groups and had to construct a bridge across a stream using building blocks that we were given. The rule was that everyone in the team had to move at least one building block during the construction. This was intended to encourage teamwork. But it was really a job best done by one person. The other teams tried to collaborate on building the structure and descended into confusion, with everyone getting in each other's way. Our team leader solved the challenge brilliantly. She simply asked everyone in the team to move a piece a few centimetres to comply with the rule, and then let the person in the team with an aptitude for puzzles like this build it alone. We finished before any other team. My point is that the task wasn't really suited to team working, so why make it one? Teamwork can also lead to inconsistency, a common cause of poor sales. In the case of a smartphone that a certain company launched, one director wanted to target the business market, and another demanded it was aimed at consumers. The company wanted both directors to be involved, so gave the product a consumer-friendly name, but marketed it to companies. The result was that it met the needs of neither group. It would have been better to let one director or the other have his way, not both. Now, industriousness, or hard work. It's easy to mock people who say they work hard. After all, a hamster running around in a wheel is working hard and getting nowhere. Of course, hard work is valuable, but only when properly targeted. Otherwise, it wastes the resources that companies value most, time and energy, and that's bad for the organisation. There's a management model that groups people according to 4 criteria: clever, hard-working, stupid, and lazy. Here, lazy means having a rational determination not to carry out unnecessary tasks. It doesn't mean trying to avoid work altogether. Most people display 2 of these characteristics, and the most valuable people are those who are both clever and lazy. They possess intellectual clarity, and they don't rush into making decisions. They come up with solutions to save the time and energy spent by the stupid and hard-working group. Instead of throwing more man-hours at a problem, the clever and lazy group looks for a more effective solution. Next, we come to creativity. This often works well. Creating an attention-grabbing TV commercial, for example, might lead to increased sales. But it isn't always a good thing. Some advertising campaigns are remembered for their creativity without having any effect on sales. This happened a few years ago with the launch of a chocolate bar. Subsequent research showed that plenty of consumers remembered the adverts, but had no idea what was being advertised. The trouble is that the creator derives pleasure from coming up with the idea and wrongly assumes the audience for the campaign will share that feeling. A company that brings out thousands of new products may seem more creative than a company that only has a few, but it may be too creative and make smaller profits. Creativity needs to be targeted to solve a problem that the company has identified. Just coming up with more and more novel products isn't necessarily a good thing. And finally, excellence. We all know companies that claim they strive for excellence, but it takes a long time to achieve excellence. In business, being first with a product is more profitable than having the best product. A major study of company performance compared pioneers, that is, companies bringing out the first version of a particular product, with followers, the companies that copied and improved on that product.
The study found that the pioneers commanded an average market share of 29%, while the followers achieved less than half that, only 13%, even though their product might have been better. Insisting on excellence in everything we do is time-consuming, wastes energy, and leads to losing out on opportunities. Sometimes second-rate work is more worthwhile than excellence. Make sure it's excellent sounds like a good approach to business, but the just get started approach is likely to be more successful. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. चलें चेक कर लेते हैं, इसका आंसर्स चेक कर लेते हैं अब। कमेंट्स भी आए हैं। अच्छा। सर रिव्यू करके सबमिट पे क्लिक करें। हाँ जी जी कर रहा हूँ, रिव्यू करके। यस सर, मतलब टिक करें ना इसको। यस सर, वो करिए कि इसके बाद रिव्यू करने का ऑप्शन भी दिए। सर जी रिव्यू का जो टिक है ना, ये क्वेश्चन पे मार्क होता है कि आप है ना बाद जी। में हाँ हाँ आंसर ठीक है सर, रिव्यू करना। वो बता देगा कि आपने रिव्यू कर दिया है कि नहीं। हाँ वो यही होता है ना कि आपने कोई पीछे आपको लगता है कि वो रिव्यू करना है मैंने बाद में, तो उस पे रख दें आप रिव्यू का, ताकि उसका कलर चेंज हो जाता है आई थिंक हाँ सही है, इस सही है। क्वेश्चन का। सॉरी। तो हाँ ये हमारे, अच्छा हम देख लेते हैं कितने कौन कौन से गलत हैं, स्टार्ट से ही देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे शॉप्स गलत है। देर आर नो शॉप्स आई थिंक, वो प्लूरल यूज हुआ था, मैंने सिंगुलर लगा दी है। तो इस चीज का तो बहुत ही ध्यान रखना है आप लोगों ने कि एस और ई एस ये जो भी मतलब सिंगुलर प्लूरल का जो सीन है वो आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। अच्छा इस सेक्शन में किसी को डिफिकल्टी हुई हो इस पार्ट में? नहीं, चलें आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा ये है कि सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है या नहीं, ये बता दें, वरना हम सिर्फ इनकरेक्ट वाले देख लेते हैं। अच्छा 14 जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। इसमें ये था कि ओनली किचन स्टाफ हु आर 18 और ओल्डर आर अलाउड टू यूज द वेस्ट डिस्पोजल नहीं था, द मीट स्लाइसर था। क्योंकि आई थिंक उन की कोई बात तो हुई थी, वैसे पता नहीं वो थोड़ा मीट स्लाइसर जो था वो थोड़ा कह सकते हैं ना सर कि वो उसमें उसने ये कहा फॉल्टी था कि फॉल्टी था, जब तक फॉल्टी आपको था। नहीं नहीं, उसने इलेक्ट्रिकल मिक्सर का बोला था कि वो फॉल्टी है तो वो कोई नहीं यूज कर पाएगा, और मीट स्लाइसर जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिल जाएगी तो तब तक आप नहीं यूज कर सकते। और अंडर 18 के लिए तो अलाउ ही नहीं है बिल्कुल सर ऐसे। इसमें लिखा हुआ है ओनली किचन स्टाफ हु आर 18 और ओल्डर आर अलाउड टू यूज द मीट स्लाइसर। यस इट सर। मींस कि तो उन्होंने अलाउ किया था। अच्छा ये बस उसने ये सुनने कहा में था कि दो बंदों का नाम लिया था कि तुम तो 18 से छोटे हो तो तुम तो बिल्कुल नहीं अलाउड हो। तो मीट स्लाइसर जो है ना वो सिर्फ 18 से, मतलब इसका ये मतलब है ना हमारे पास मीनिंग तो ऑपोजिट ही हाँ बनेगा। उसने हाँ जब ठीक हो गया। अच्छा ये टू ऑप्शंस वाला देख लेते हैं, टू करेक्ट ऑप्शंस, ये भी ठीक हो गया है। इसमें किसी को प्रॉब्लम आई हो अगर, क्योंकि मुझे भी इस क्वेश्चन में आती है कभी कभार, तो अभी तो ये ठीक हो गए हैं। और किसी के गलत हुए हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। मैचिंग वाला जो है वो देख लेते हैं, वो भी ठीक हुए हैं सारे। किसी के इनमें गलत हैं बता दें, आप लोग माइक ओपन कर लें, क्योंकि फिर हम आगे चलें। अच्छा किसी का नहीं है क्वेश्चन, इधर तो कमेंट्स में भी कुछ नहीं आया। चलें ठीक है, आई थिंक किसी को इसमें कोई इश्यू नहीं है शायद। अच्छा नेक्स्ट में हमारे पास इनकरेक्ट हुआ है ये सेकंड वाला, दे एग्री दैट वन डिसएडवांटेज ऑफ फ्री डिजिटलाइज्ड बुक्स इज दैट दे आर जनरली ओल्ड। ये सही आना था, ना कि दे मे टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीड।
तो दे आर जनरली ओल्ड। ठीक है, बात हुई थी कोई वो जो मेल थे, मेल वॉइस थी, वो शायद बात कर रहे थे ओल्ड के वाले से, तो मैं ये आई थिंक मैंने थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है मेरे साथ, तो इसमें हुआ था कि ये डिजिटलाइज बुक के डिसएडवांटेज उन्होंने बताया था कि कॉपीराइट जो है ना वो यहाँ पे लगता नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है हम्म कि 17 साल पहले जो है ये कॉपीराइट का हम्म रूल बना था पर कोई फॉलो नहीं करता, तो उस हिसाब से हम्म, ये एक डिसएडवांटेज है ठीक हो डिजिटलाइज गया, बुक का। ठीक हो गया। वो हाँ, वो ओल्ड की बात हुई थी, बस वो ठीक हो गया, कॉपीराइट की बात बिल्कुल ऐसे ही है, वो हुई थी। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स तो इजी थे काफ़ी। फिल इन द ब्लैंक्स आई गेस हर जगह जहाँ पे भी आते हैं इजी होते हैं, बस थोड़ी स्पेलिंग वगैरह की ख्याल, स्पेलिंग की चीज़ों के ख्याल रखने हैं। और क्या होता है, बस एस वगैरह का, सिंगुलर प्लूरल वगैरह का ध्यान रखना है। ये थर्ड पार्ट कर लिया ना हमने, ठीक हो गया। अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये अच्छा ठीक है, ये गलत था, ये मेरे से मिस हो गया मुझसे, ये साइड इफेक्ट्स था ना कि डेंजर। ये मैंने क्योंकि सही पता लगाने के लिए मैंने अभी ये लिख लिया था। सो अच्छा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी ये गलत हुआ है, जो ये 29% नहीं मार्केट शेयर आना था। सो अच्छा, क्वेश्चन आप यहाँ लोगों ने पे रिपीट कर गलती यहाँ लेना एक की था। थी, हाँ हाँ इंस्ट्रक्शन हाँ। जो है ना फॉलो नहीं किए। क्यों भाई, आपने यहाँ पे नंबर लिखा है कि नंबर तो ऊपर दिया ही नहीं हुआ है इंस्ट्रक्शन में, नो मोर देन एक्चुअली नंबर, वर्ड। एक्चुअली नंबर का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इधर एक्चुअली होता है कि नंबर भी हम लिख लेते हैं, वो आंसर होता है। मैंने इसलिए वो मेरा ध्यान जो है वो 29% पे चला गया ना। वही मैं कहने लगा था। नो, ये पढ़ लेना है आप लोगों ने क्वेश्चन के लिखा हुआ है, कंप्लीट द नोट्स, राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स इन ईच गैप। और आपने देखा होगा यहाँ 2 वर्ड्स भी जो है ना मैंने लिखे हैं, तो ये लाजमी देख लेना है। और ये नंबर, सर ठीक कह रहे हैं वो बात, कि नंबर का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो आपने वो नहीं लिखना था, लेकिन मुझे वो आंसर इस तरह लगा है। अब 29, वो मार्केट शेयर का ही रिलेटेड है 29%। तो आंसर सही जो है वो वर्ड्स है, ना कि नंबर्स। और ठीक सर हो इसमें गया। एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जब भी हम इस तरीके के परसेंटेज वाला लाइक किसी का आंसर दे रहे होते हैं ना, तो 29% हम इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। तो लाइक सिंबल तो कोई हमें ऑप्शन नहीं दिया होता ना कि वन वर्ड नंबर और सिंबल, तो ये परसेंटेज का सिंबल कभी भी एक्चुअली आंसर वो की। मैंने इसलिए भी लगाया क्योंकि पिछले टेस्ट नहीं कोई सर, वो मैं नहीं प्रैक्टिस कह रहा हुए कि तो वो गलती आपने की आ, है, तो हो जाता है। बट मैं वैसे बता रहा हूँ नहीं, कि जब हम मैं आंसर एक दे रहे होते मिनट हैं एक तो बात कर रहा था, एक मिनट। यस वो ना एक्चुअली में ना ये परसेंट एक जगह पे मैं कल या आज पता नहीं प्रैक्टिस की थी लिसनिंग की, तो वहाँ पे कोई इसी तरह का आया था आंसर, तो उन्होंने डिफरेंट लिखे हुए थे कि आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं और ये सिंबल भी डाल सकते हैं। वो इस वजह से मेरा जो है ना, मैंने परसेंटेज ये तब आंसर ही गलत है वैसे, वर्ड्स तब आने थे। मैंने कहा था कि परसेंटेज अगर की बात हो तो आई थिंक वो भी ठीक होता है अगर आप सिंबल लगा लें। तब जो है ना आपको वहां पे दिया होगा कि 2 वर्ड्स और अ नंबर, तो वो वहां पे मेंशन होता है कि आप नंबर भी लिख सकते हैं और वर्ड्स भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ वर्ड्स का मेंशन हो तो फिर सिर्फ आपको वर्ड्स ही लिखने पड़ते हैं। तो इस तरह होता है इनका। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर महबूब और सर उबैद। और अब आगे हम क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? सर मैं रीडिंग का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। आज इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और उसके जी बाद फिर ये कि मैं कल रीडिंग की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जी ठीक हो गया। किसी के क्वेश्चन हैं लिसनिंग पार्ट से, वो कर लें प्लीज। ठीक है सर उबैद, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है। सबको क्लियर है चीजें? हेलो जी जी। सर, मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग ये जो एमसीक्यूज होते हैं, तो उसका कुछ स्ट्रेटजी बताए से ज्वाइन किए स्पॉट। एमसीक्यूज की स्ट्रेटजी, एमसीक्यूज की स्ट्रेटजी तो एज सच लिसनिंग में जो है ना,
वो यही है कि कंसंट्रेशन काफी ज्यादा चाहिए, बिकॉज ऑप्शन जो होगा वो, अच्छा ये है ना कि कुछ जो तीन ज्यादातर ऑप्शन दिए होते हैं ना एमसीक्यूज में, तो एक आध तो जो होता है वो मतलब बिल्कुल ही होता ही नहीं है, वो ऑपोजिट होता है, उसको आपने पहले ही कट कर देना है। यानी कि आपने दिमाग में ऐसे बस आपने उसके ऊपर लकीर लगा देनी है कि ये तो है ही नहीं। तो बाकी जो रह जाते हैं उसमें आपने थोड़ा सा करना है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन वाली बात है ज्यादातर। अ, आपने सही लगाना है, इसके अलावा तो कोई स्ट्रेटजी आई डोंट थिंक कि कोई खास स्ट्रेटजी होती है इसके लिए। अच्छा, मुझे नहीं पता कि अभी आपने जो अटेम्प्ट किया है इसके अंदर ये यूज अच्छा, स्ट्रेटेजी। इसमें ना मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। इसमें ये होता है कि जो सेक्शन है ना ये इसके लिसनिंग के, तो इसमें सेक्शन वाइज जो है ना आपको ये मुश्किल होता जाता है। जैसे जैसे आप सेक्शन आगे की तरफ जाते जाते हैं तो वो जो है ना आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाते हैं। उसमें आपको अगर एमसीक्यूज आपके पास फोर्थ सेक्शन में आ रहा है या थर्ड सेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्टली ऑप्शंस नहीं दिए गए होंगे, बल्कि वो आपको घुमा फिरा के जो है ना ऑप्शन सही ऑप्शन का बताएंगे। ऑप्शन सारे को सबका जिक्र करेंगे, लेकिन घुमा फिरा के करेंगे ताकि आप जो है ना कंफ्यूज हों और गलत आंसर लगाएं। तो इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स में भी यही होता है कि आपको घुमा फिरा के आंसर दिया जाता है। ऐसे आसान सा आंसर नहीं दिया जाता। पार्ट वन के अंदर आप अगर नोट करें तो उसमें यही होता है कि आसानी से आपको जो है ना जवाब उसका मिल जाता है। तो इस तरह होता है, इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप जो है ना सेक्शन वाइज आगे जाते हैं। तो इस तरह आपको सेक्शन 4 के अंदर मोर अटेंटिव और सारी चीजें, सारे वर्ड्स आपको सुनने चाहिए होते हैं कि वैसे तो सब सारे सेक्शंस के अंदर, लेकिन आपको 4 सेक्शन के अंदर मोर केयरफुली होके और ग्रामर्स और इस तरह की चीजें देख के फिर आपको जो है ना आंसर चूज करना चाहिए, और इस तरह। ठीक हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा जिनका क्वेश्चन था। यस सर, थैंक यू सर, क्लियर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। और सर वैद, आप फिर स्टार्ट कर दें, यस 15 सर, मिनट है हमारे मैं पास। सर की बात जो सर ने क्वेश्चन पूछा उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, उसके बाद मैं भी चलता हूँ। सर देखें, ये जो आइल्स की हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो इसमें देखें अब आपने अपनी ना, वो आपको पता चल गया मैं कहाँ पे वीक हूँ। तो जो जैसी आप अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई कर लेना, तो उस लाइक हम ये करते हैं कि हम मॉक टेस्ट जो है ना वो पूरा एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। 30 मिनट्स के अंदर अंदर एग्जाम कंडीशन करने की कोशिश करते हैं। तो आप जब आपको पता लग जाए कि अब मेरी यहाँ पे वीकनेस है, तो पहले आप उस पर फोकस करें। एक कुछ दिन जो है आप सिर्फ वही वाले क्वेश्चन करें जहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स होती हैं। 3 दिन में 3 से 4 आप टेस्ट दें, और उसमें उसी पार्ट पे ज़्यादा फोकस रखें। और सिर्फ कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने पास आइल्स की बुक्स डाउनलोड कर लें और ऑडियो डाउनलोड कर लें, तो आप उस अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके टेस्ट को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है कि जब आप डिलिबरेटली किसी पार्ट पे फोकस करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो वो ज़्यादा आपको ना लाइक वो चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। अच्छा, चलिए ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लिस्टिंग पार्ट हमारा कवर हो गया। तो नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो है रीडिंग का मॉड्यूल है। इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, और जिस तरीके से रीडिंग में होता है कि सॉरी लिस्टिंग में होता है कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीजेज विद ईच सेक्शन, यहाँ पे हमारे पास 3 टोटल पैसेज होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, और हर सेक्शन में जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो इंक्रीज करता जाता है। तो टोटल 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, और ईच सेक्शन के अंदर हमारे पास 13 क्वेश्चन होते हैं। 13 + 13 = 26, और नेक्स्ट में जो है हमारे पास 14 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मिनट्स हमारे पास टोटल 60 मिनट्स होते हैं। अच्छा, इसमें हम कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं कि या तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होगा या यस नो नॉट गिवन होगा। अच्छा, इनकी तरफ मैं आता हूँ, पहले मैं ओवरऑल एक देख लूँ कि हमारे पास और कौन से होते हैं। मैचिंग हेडिंग्स क्वेश्चन होते हैं, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, टेबल कंप्लीशन होती है, और समरी कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्लो चार्ट कंप्लीशन, एंड डायग्राम।
डायग्राम कौन सी होती है, आई गेस? डायग्राम भी डायग्राम लेबल का होता है, लेकिन ये मेरे पास एक दफा आया था डायग्राम लेबलिंग का। हाँ सर, मेरे पास अभी तक वैसे नहीं आया, लेकिन मैं तो सारी बुक्स भी कर चुका हूँ। इसमें हाँ ना जो ज्यादातर मेन कवर होते हैं ना, वो यही ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मैचिंग हेडिंग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेबल कंप्लीशन, ये यस सर। ज्यादा नहीं देखी जाती। समरी कंप्लीशन ज्यादा आती है, तो फिल इन यस द सर, ब्लैंक्स फिल इन आते द हैं। ब्लैंक आती है। ये फ्लो हाँ, चार्ट और डायग्राम वाले होते हैं ना, ये लाइक बहुत रेयर होते हैं, लेकिन लाइक आप आ लाइक सकते हैं। आ सकते हैं जो भी है। शॉर्ट आंसर में वही चीज है कि फिल इन द ब्लैंक्स ही होते हैं। शॉर्ट आंसर में एक वन वर्ड या टू वर्ड लिखने होते हैं। अच्छा, मैं इनकी इनकी बात कर रहा था कि इसमें जो होता है ना, लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इसकी अगर आप एक वीडियो देखें ना, तो यूट्यूब पे काफी फेमस है और मिलियंस में उसके व्यूज हैं। आइल्स लिस्ट की एक वीडियो है, उसमें उसने सिंपल से बताया हुआ है कि एक ऑप्शन जो है वो ट्रू तब होगी जब, या यस होगी जब वो टेक्स्ट में गिवन है, और फॉल्स तब होगी जब नहीं गिवन है। जो फॉल्स तब होगी जब नहीं गिवन है, सर, लेकिन जी जी, सर गिवन है, मैं लेकिन गलत है, हाँ गलत है। और कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है बात। और नॉट गिवन जो है वो दी वो हुई नहीं होगी। दी वही नहीं होगी। अच्छा, अब वालेकुम कोई भी सिंपल सलाम। पर्सन। सर मैं वो अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ अच्छा। अच्छा, तो लाइक इसके जी जी। सर हाँ महबूब, आप अपना माइक ऑफ कर दें। जी मैम समीना। सर एक ये जो सर बता रहे हैं ना कि गिवन नॉट गिवन, ये जो ट्रू फॉल्स होगा, इसी तरह एक कोई ऐसे ही मैं कोई सेशन ले रही थी, उसमें ना हम लोग जैसे एक कहते हैं ना कि उससे नेक्स्ट पैराग्राफ, तो वो जो पैसेज था वो बहुत बड़ा था, तो जो नीचे के जो दो नेक्स्ट पैराग्राफ थे ना उसमें वो इन्फॉर्मेशन थी भी नहीं, तो हमने ज्यूम कर ली कि नॉट गिवन है। लेकिन जो थर्ड वाला जो मतलब लास्ट में जैसे आता है ना और पैसेज, उसमें वो मतलब ट्रू या फॉल्स समथिंग थी लेकिन गिवन थी। तो ये भी एक मतलब टाइम लगता है या देखने की मिसकंसेप्शन यस कहते मैम मैम, हैं क्या, कि ये समटाइम मैम हमको पता नहीं चलता नॉट मैं गिवन मैं के इसकी बारे में। तरफ इसमें मैं इसी की तरफ मैम, आ रहा था। जी जी, जी अच्छा। ठीक है सर उबैद, आपको बताते हैं इसकी स्ट्रेटजी। ये रिलेटिवली आपको बस एक शॉर्ट हिंट दे दूं, इजी होते हैं सॉल्व यस। करना। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि वो वीडियो एक काफी फेमस है, और लाइक कोई भी इंसान जब लाइक पढ़ के भी यही समझ आता है कि ट्रू का मतलब जब होगा तो ट्रू होगा, गिवन होगा तो यस होगा, अगर वो बात है लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है तो नो या फॉल्स हो जाएगी, और अगर वो टेक्स्ट में नहीं गिवन है तो लेकिन वो फिर लाइक वो वीडियो इतनी फेमस क्यों है? तो इसका आंसर लाइक मुझे तो नहीं समझ आता, लेकिन इसका आंसर यही है कि लाइक लोगों ने ना लाइक ये चीज कंफ्यूज होते हैं फॉल्स और नॉट गिवन में। ठीक है, तो अब इसमें जो होता है ना, बड़े ये मैम समीना भी जो बात की कि ऐसा होता है कि आप ना उसको नॉट गिवन और फॉल्स के बहुत ही ना करीब लाइक 50-50% दोनों के चांस बन रहे होते हैं। तो आपने पूरा रीड नहीं किया हुआ होता और आपको लगता है कि यार ये तो गिवन ही नहीं है। और समटाइम्स जो होती है, जो वर्ड जहाँ जो सेंटेंस लिखा होता है वो ऐसा लिखा होता है कि आपको ना आप उसको सही कंप्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ना दो चीजें काम आती हैं। आपने इसकी स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ वो तो ये है कि लाइक मोस्टली यही फॉलो की जाती है कि आप जो है वो पूरा पैराग्राफ रीड करें, क्लोज रीडिंग करें। उसके बाद फिर ये है कि आप ढूंढें कि वो चीज़, जो बात जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहाँ पे है, जिस एरिया में वो गिवन है उस जगह को आप एक दफा रीड करें, दो दफा रीड करें, और एक या दो या मोस्ट बहुत रेयर केस ये होगा कि आपको तीसरी दफा कोई भी चीज रीड करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये है कि क्लैरिटी हो जाएगी। या एक एक या दो दफा रीड करने में आपको जो है वो समझ आ जाएगी कि ये बात गिवन है या फॉल्स है या नॉट गिवन। तो मेन चीज ये है कि आपने पहले पैसेज रीड करना है, उसमें चीज आइडेंटिफाई करनी है कि ये बात कहाँ पे गिवन है। ठीक है, आया इस पैसेज में गिवन है, ये नेक्स्ट पैसेज की तरफ मूव करें। तो इनकी तरफ हम आएंगे कल से इंशाल्लाह, मोर हम डिटेल में इन सारे टाइप्स को देखेंगे। नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं कि रीडिंग में जो आपकी ना तीन किस्म के स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास स्किमिंग है,
सर उबैद आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा आई थिंक उनका अच्छा नेट इशू आ गए हैं, ठीक है ओके। यू आर म्यूट। सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अच्छा, मैं एक सैंपल दे रहा था कि हमें कोई इनविटेशन कार्ड अगर मिलता है ना, तो उसमें हम सिर्फ देखेंगे कि कौन सी डेट को है और वेन्यू क्या है, और लाइक किस बंदे से हम कांटेक्ट कर सकते हैं मोर डिटेल्स हासिल करने के लिए। हम बाकी रीड नहीं करेंगे, उसमें काफ़ी सारी डिटेल मेंशन होती है। तो स्कीमिंग इसी तरीके से होती है कि हम कोई जनरल टेक्स्ट अगर रीड कर रहे हैं ना, तो उसमें हम पहली लाइन रीड करेंगे, आखिरी लाइन रीड करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट डेट लिखी हुई है, किसी इंपॉर्टेंट बंदे का नाम लिखा हुआ है। तो मेन मेन चीज़ों की तरफ जहाँ जहाँ जो हमारी आइज है वो ढूंढेंगी कि मेन इन्फॉर्मेशन कहाँ गिवन है। हम थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे तो उससे हमें जो है ना पूरे पैराग्राफ का एक ओवरव्यू हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हमारे पास ना स्किमिंग कहलाती है। अच्छा, स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग ये होती है कि हम शुरू से एक एक तरफ से रीडिंग शुरू करते हैं, और उसमें ना हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हमने जो है ना क्या चीज़ हम ढूंढ रहे हैं। लाइक अगर हम कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि किसी की डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या हम ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक चीज़ कब कंस्ट्रक्ट हुई थी, या फिर हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन से ऑथर ने जो है लाइक ये बात कही थी, और लाइक कोई भी एक चीज़ हो सकती है। और हम उसको ढूंढने के लिए जब पूरे टेक्स्ट को रीड करेंगे और जैसे ही वो चीज़ मिल जाएगी तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि हम स्कैन करते हैं। हम लाइक जिस तरीके से आप स्कैनिंग का एक वैसे मीनिंग यही होता है कि ओवरऑल आप ढूंढते हैं। जिस तरीके से अगर आप मैं कहूँ कि मैं अपने कंप्यूटर को क्या वायरस के लिए स्कैन करूँ, तो मेरा कंप्यूटर जो है वो एक जगह से शुरू करेगा और सारी फाइल्स को देखेगा कि कहीं पे वायरस तो नहीं है। उसको वायरस मिलेगा तो मुझे बता देगा कि योर कंप्यूटर इज एट रिस्क, डू दीज स्टेप्स। तो स्कैनिंग में हमारे पास ये होता है। उसके बाद होता है क्लोज रीडिंग। अच्छा, क्लोज रीडिंग में हमारे पास ये होता है कि हम ना सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपने माइंड में उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और इसमें हम लार्ज चंक ऑफ सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस जो है हम उनको रिटेन करने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर मैं क्लोज रीडिंग करूँ ना, तो मैं ये पूरा एक दो तीन चार लाइनें एक साथ पढ़ूंगा और इनको समझने की और अपने माइंड में रिटेन करने की कोशिश करूंगा। Find an article, identify some important words, change some words to synonym, swap with friend। तो क्लोज रीडिंग में हम ये करते हैं कि हम क्लोजली रीड करते हैं, मतलब हम पूरा पैराग्राफ रीड कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसको रीड अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि अच्छा, जो अगर ये वर्ड लिखा है तो इसके सिमिलर वर्ड कौन सा हो सकता है, कोई भी वर्ड को है। इसको हम मोर डिटेल में हम कल इसको देख लेंगे, आज हमारे पास टाइम शॉर्ट है। तो स्कैनिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन फाइंड एन आर्टिकल, identify some important words, and change some words to synonym, and then you can do this activity with your friend as well, कि आप important words स्कैन करें और synonym अपने पास फाइंड आउट करें, फिर दूसरे अपने फ्रेंड को वो आर्टिकल दें, फिर वो रीड करे और उसमें से वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करके synonyms निकालें। और फिर आप देखें कि हु डिड बेटर, किसने ज़्यादा वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके ज़्यादा वर्ड्स को synonyms में कन्वर्ट कर पाया। तो इस चीज़ से ना आपकी स्कैनिंग का काफ़ी इम्प्रूव होती है। क्योंकि ये है कि जब हमारे पास आइल्स में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो इस तरीके से गिवन होते हैं, लाइक क्वेश्चंस ना हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया होता, उसको ना रीफ्रेस करके क्वेश्चन पूछा गया होता है, तो सिमिलर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको उसमें काफ़ी हेल्प करेगी। स्किमिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि फाइंड एन आर्टिकल, क्रिएट अ टाइटल फॉर ईच पैराग्राफ, स्वैप विद द पार्टनर, टाइम लिमिट प्लस पॉइंट्स। अच्छा, इसमें स्किमिंग में क्योंकि हम ये करते हैं कि हम ओवरऑल एक ओवरव्यू लेके अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसमें ये है कि आप जल्दी से रीड करेंगे, ज़्यादा टाइम आपने नहीं लेना, हर पैराग्राफ को रीड करते जाना है सर। और पूरा रीड नहीं करना। सर एक मिनट, एक मिनट सर, बस मैं मुझे मोमेंट दें।
आपने पहली लाइन रीड करनी है, आखिरी लाइन रीड करनी है हर पैराग्राफ की, दरमियान में थोड़ा सा आपने देख लेना है इंपॉर्टेंट चीज़ को, और उसके बाद आपने ना उसको टाइटल देने की कोशिश करनी है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके ना अपनी स्किमिंग और स्कैनिंग और इनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, क्लोज रीडिंग वो हम थोड़ा सा डिटेल में कल देखेंगे। और इस आज के लिए इतना काफ़ी है, टाइम सर हमारे पास। सर और इसका स्कीमिंग को कल डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे अभी, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, एंड होने वाला है, तो ये अभी सर तो। आज बस हल्का सा एक ओवरव्यू देना है दिया है, कल इंशाल्लाह फिर जी हम जी। थोड़ा डिटेल में देखेंगे रीडिंग को, और कोशिश करेंगे कि हमारे पास टाइम हुआ तो हम रीडिंग जो है, रीडिंग का मॉड्यूल जो है उसकी अ, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी शुरू कर दें। जी, उसके साथ ही हम रीडिंग के साथ ही आई थिंक प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की, ताकि वो फिर हो जाए, वो जो स्किमिंग एंड स्कैनिंग है वो भी हो जाए साथ साथ। यस सर, ओके। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, स्लैक पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं इसको। यस सर, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो